भाई पानी ला ओ अबे, ये गर्मी ने मेरे नहीं सबके पसीने छुड़ा दिए है भाई। इवन मार्केट के भी पसीने छुड़ा दिए। मार्केट इज डाउन एंड निफ्टी एंड सेंसेक्स आर रेड। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी और यू हैव टू विथड्रॉ ऑल योर मनी एंड बुक योर लॉस। Relax, it is an opportunity. And first of all, we discuss what is the reason of this market fall. This market fall last seen at 2012. Yes, I am also very small, but it seems in 2012 that the market is all time down till 6 to 7 months, and this is the same situation that market is continuously down. Okay, so let me discuss why market is down. सो मैंने मुझे इतना याद नहीं है, मैंने एक लिस्ट बनाई है। ओके सो मैं बता देता हूँ आपको मार्केट क्यों डाउन है। पहले तो ग्लोबल फैक्टर है। ओके ग्लोबल फैक्टर जैसे कि यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। ओके तो हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो स्विच होंगे यूएस के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर। ऑयल प्राइसेस तो आपको पता ही होगा, ऑयल प्राइसेस हमेशा इंक्रीज होता है और इट इज 75% ऑयल इज अंडर द यूएस। सऊदी अरब में यूएस का ही पपेट है। इट इज वेरी कॉमन, यू नो दैट। પછી ग्लोबल ट्रांजैक्शन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यूएस के अंदर उसके वजह से भी है। जैसे कि अभी आपने देखा कि टैरिफ्स हो गए, 25% टैरिफ इन इंडिया, 36% टैरिफ इन बांग्लादेश, समथिंग 35% टैरिफ ऑन Pakistan, 25% tariff on China. Okay, so it is very connected. Not 35, 53% tariff in China. It is very bad for that inflation in America. But it is also bad for India because India